Hello, Gaurav ji. Welcome. Thank you for joining on time. You are great. Thank you, Richa. How are you? I am really proud of you. No, I like to be on time. Uh, It's an inspiration. though I'm out, I have a meeting at 7:30, so I can just be in this call Doesn't till matter. 7:30. Yeah. We will finish it today early also Okay. because we will be doing exercises for habit number one today, which is being Okay. proactive. Okay. Do you have pen Okay. and paper with you? Yes, I'll find pen and paper. I'll find pen and paper here. It's not an issue. Do it. We will start the exercise. Okay. I'll just find a pen and paper. Yes. Hmm. Between stimulus and response, man has the freedom to choose. In addition to self awareness, we have imagination, the ability to create in our minds beyond our present reality. We have conscious, a deep inner awareness of right and wrong, of the principles that govern our behavior and a sense of them. And we have independent will, the ability to act based on our self awareness, free of all other influences. The basic idea is that we are conditioned to respond in a particular way to a particular stimulus. Proactive means that it's a context from where we operate, and the context is that between stimulus and response is our greatest power, the freedom to choose how we react. It means that as human beings, we are responsible for our own lives. Our behavior is a function of our decisions, not our conditions. We can subordinate feelings to values. We have the initiative and responsibility to make things happen. Responsibility means response ability, the ability to choose our response, the ability to subordinate an impulse to a value is the essence of a proactive person. Reactive people are driven by feelings, by circumstances, by conditions, by the environment. Proactive people are driven by values, carefully thought about, selected, and internalized values. Proactive people make value based choice and response. So today we have to choose. And so दो पेज में दो कॉलम बनाने हैं. एक तो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस एंड एक सर्कल ऑफ कंसर्न. Gaurav ji, you can unmute yourself if possible. I'm actually out somewhere, Richa, and there is some loud music here, so that is why I अच्छा. muted myself. मुझे वैसे आप बोल रहे हो तो सुनाई नहीं आ रहा पीछे से कुछ भी. हाँ, राइट नाउ म्यूजिक बंद हो गया है, तो जब स्टार्ट होएगा तब हम म्यूट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है. तो मैं अभी बोल रही हूँ कि आप दो पेज को दो में डिवाइड कर लो. एक तो सर्कल हम्म ऑफ इन्फ्लुएंस एंड एक हम्म सर्कल ऑफ कंसर्न. ओके। तो आपको समझ में आया व्हाट इज सर्कल ऑफ कंसर्न? यस, सर्कल ऑफ कंसर्न इज बेसिकली जो हम लोग के लाइफ में हो रहा है, विच इज कंट्रोलिंग अस एंड विच इज मेकिंग अस डू थिंग्स which maybe we should not be doing. नहीं, सर्कल ऑफ कंसर्न जैसे मेरे को हो गया थे, मुझे फर्क पड़ता है घर में किस तरह से क्या हो रहा है. मेरे को लगता है आई एम हाँ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. पर हाँ ओके। समवेयर मेरे को लगता है कि उसमें मैं कुछ कर नहीं सकती बिकॉज घर में वो ही होगा जो बड़े कह रहे हैं. हम्म हम्म राइट. मुझे लगता है हम्म घर एक तरह से चलना चाहिए पर उस तरह से नहीं चल रहा. और मेरे हम्म पास सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस भी नहीं है उसमें, क्योंकि उसमें सारी पावर
मदर इन लॉ के पास है या भाभी के पास है या पापा के पास है या मीत के पास है या मेरे पास नहीं है, हम्म, राइट? ओके, तो वो मेरे ओके, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में नहीं आता कि किस तरह से घर चलना चाहिए, हम्म, या पहले नहीं आता था, ये मैंने पुराना लिख, राइट, तो राइट, हाउस रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सर्वेंट को कैसे मैनेज करना है, फूड को हम्म, कैसे मैनेज करना है, पहले नहीं आता था, अब आता है। पर पहले मेरे ये सर्कल ऑफ कंसर्न में था। हम्म, और सर्कल ऑफ कंसर्न में जाऊं तो बिजनेस में मेरा सर्कल ऑफ कंसर्न है कि सेल्स बढ़ जानी चाहिए, हम्म, है ना, 50 जनों की टीम हो जानी चाहिए, या स्टाफ को उस तरह से काम करना चाहिए, सारा सर्कल ऑफ कंसर्न है। हम्म, 50 प्रोडक्ट लॉन्च हो जाने चाहिए, इस प्रोडक्ट को इस तरह से बिकना चाहिए, इतनी की हम्म, सेल्स, ये सारा सर्कल ऑफ कंसर्न है, हम्म, क्योंकि ये चाहिए 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 चाहिए। हम्म, तो वो सर्कल ऑफ कंसर्न लिखो, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे फिर आते हैं, हम्म, क्योंकि सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में आएगा जैसे आई कैन मेक वीडियोस, मैं हम्म, वीडियोस बना सकती हूँ, एक्शन एक्शन ओरिएंटेड हो गया, मेरे हाथ में क्या है, मैं वीडियोस बना सकती हूँ, मैं प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकती हूँ, मैं R&D कर सकती हूँ, मैं वैल्यू प्रपोर्शन इंक्रीज कर सकती हूँ, मैं पैकेजिंग इम्प्रूव कर सकती हूँ, मैं स्टाफ को ट्रेनिंग कर सकती हूँ। लाइक सर्कल ऑफ कंसर्न में अपने ये भी लिख सकते हैं क्या कि मेरा वाइफ के साथ रिलेशन ठीक हो जाए, हाँ, could कंसर्न हो that गया। come? ओके, हाँ, बहुत ब्रॉड हो गया ना, इसको लिख लो सर्कल ऑफ कंसर्न। अब वाइफ ठीक है, के साथ रिलेशन में एक्चुअली में आप क्या इन्फ्लुएंस कर सकते हो वो अलग पेज पे लिखो, हाँ, things you have control over and you can take direct action on, which is your, that's your circle of influence। अब आप ये बोलो मेरी वाइफ को इस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, मैं हम्म, चाहता हूँ मेरी वाइफ मॉडर्न हो जाए, मैं चाहता हूँ मेरी हम्म, वाइफ बिजनेस करना शुरू कर दे, किसी किसी का होता है, या मेरे, मैं चाहता हूँ मेरी वाइफ बच्चों पे चीखे ना, हम्म, वो तो वो आपका, मेरे कंट्रोल में नहीं है। वो सर्कल ऑफ कंसर्न हो गया आपका। हाँ, राइट। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में आप क्या कर सकते हो, व्हाट सो इज इट इन योर कंट्रोल इन योर रिलेशनशिप, यू सो राइट जैसे सर्कल ऑफ जैसे इन्फ्लुएंस। जैसे वो आई कैन गिव टाइम, हाँ, टू योर सो वाइफ, दिस बिकम्स, दैट्स हाँ, दैट्स इनटू सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस, यस, तो आप वो चीज लिखिए। मैं 2 मिनट चार्जर लेके आई। यस। और जैसे सर्कल ऑफ मेरा कंसर्न है कि मेरे को रोज जिम जाना चाहिए, मेरा सर्कल हम्म, ऑफ कंसर्न है कि मेरे को 52 हम्म, 50 केजी का होना चाहिए, वो मेरा हम्म, कंसर्न है। और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में मैंने क्या किया, जिम मुझसे हो नहीं रहा, मैं खुद को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ, मैं जिंदल जा रही हूँ, वो मेरे डायरेक्ट कंट्रोल में है, टू प्लान हम्म, एंड गो। हम्म। तो आप जब ये करोगे ना तो आपको नई एक्सेस मिलेगी कि एक्चुअल में व्हाट इज इट इन योर कंट्रोल। So we have to focus only on things that we can control. So like in this, I put कि I can give time to her, I can talk to her, I can listen to her, Yes. I can Talk take to her her out. about what? Okay, about what? So About you what you could don't have to be, talk no, about to her about कि तुम ये चेंज कर लो, वो चेंज कर लो, ये कर लो, वो कर लो, वो आपके नहीं, नहीं, सर्कल ऑफ नहीं, कंसर्न हाँ, में था। सर्कल ऑफ कंसर्न में आएगा, but talk to her about, the problems we've been having, उसको कैसे ठीक करें, कोई अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको बात करके सॉर्ट आउट कर लें, या it could be a lot of things, अच्छा, basically मैं just एक चीज clearing एक out. चीज में एक चीज मैं बुक में से पढ़ रही हूँ, Yeah. proactive people focus their efforts in the circle of influence, they work Hmm. on the things they can do something about, the Hmm. nature of their energy is positive, enlarging and magnifying, Hmm. causing their circle of influence to increase. Hmm. Reactive people on the other hand focus their efforts in the circle of concern,
They mm, focus on the weakness of other people, the mm, problems in the environment, the circumstances over which they have no control. mm, Their focus results in blaming and accusing attitudes, reactive language, and increased feelings of victimization. mm, The negative energy generated by that focus, combined mm, with the neglect in the areas they could, mm, could do something about, mm, causes the circle of influence to shrink. I'm reading it again. The negative energy generated by that focus on the problem, focus mm, on things of blaming mm, and what's something wrong in the other person or the situation, mm, combined with the neglect in the areas they can do something about, combined with neglect in the areas they can do something about, causes their circle of influence to shrink. तो अपन को yeah, क्या करना है, फिगर आउट करना है एक तो एरियाज इन विच mm, कैन डू समथिंग अबाउट, नंबर mm, वन प्रायोरिटी. mm. तो वो लिख लो कि अब इन योर रिलेशनशिप विद योर वाइफ व्हाट आर द एरियाज दैट यू हैव निग्लेक्टेड, in which you have 100% control and that you can do something about. हाँ, सो मैंने नोट किया है जैसे टाइम इज इन माय कंट्रोल, Hmm. talking to her is in my control, Hmm. listening to her is in my control, Perfect. take taking her out is in my control. Wow. So, these four things, I think if I am able to do, then, आपका a circle lot of, बढ़ जाएगा. so a lot of my problems can get solved with this. Perfect. परफेक्ट. अब मैं वापस से रिएक्टिव फोकस पढ़ लेती हूँ. एज Yeah. लॉन्ग एज वी आर वर्किंग इन आवर सर्कल ऑफ कंसर्न, वी एम्पावर द थिंग्स विद इन इट टू कंट्रोल अस. अगर अपन सर्कल ऑफ कंसर्न में काम करते हैं तो अपन थिंग्स को कंट्रोल करने देते हैं अपने को. वी आर एन टेकिंग द प्रोएक्टिव इनिशिएटिव नेसेसरी टू इफेक्ट पॉजिटिव चेंज. Hmm. Earlier, I shared with you the story of my son who was having serious problems in school. Sandra and I were deeply concerned about his apparent weakness and about the way other people were treating him. But those things were in our circle of concern. As long as we focused our efforts on those things, we accomplished nothing except to increase our own feelings of inadequacy and helplessness and to reinforce our son's dependence. It was only when we went into our circle of influence, when we focused on our own paradigms, that we began to create a positive energy that changed ourselves and eventually influenced our son as well. By working on ourselves instead of worrying about conditions, we were able to influence the conditions. Because of the position, wealth, role, or relationship, there are some circumstances in which a person's circle of influence is larger than his or her circle of concern. The problems we face fall in one of the three areas: direct control, problems involving our own behavior; indirect control, problems involving other people's behavior; and Hmm. no control, problems Hmm. have we can do nothing about, such as our Hmm. past or situational realities. Hmm. So I think the problem that I have, Richa, is things that the last thing where we have no control, which has to इसमें do with. आपको इसमें लिखा है, no control problems involve taking the responsibility to change the line on the bottom of our face, to smile, to genuinely and peacefully accept these problems and learn to live with them, even though Okay. we don't like them. In this way, Hmm. we don't do not empower these problems to control us. Hmm. We share in spirit embodied in the alcoholic. Lord, give me the courage to change the things which we can change and ought Hmm. to be changed. The serenity to accept the things which cannot be changed. Hmm. And the wisdom to know the difference. Hmm. वापस से पढ़ रही हूँ. Lord, give me the courage to change the things which can and ought to be changed, the serenity to accept the things which cannot be changed, and the wisdom to know the difference. Hmm.
ओके। अपन को इसमें सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से सिर्फ इतना समझना है कि कौन सी चीजें मेरे डायरेक्ट कंट्रोल में है हम्म, और उसमें मैं क्या क्या कर सकता हूँ। उस चीज को इतना अच्छे से करो, इतना अच्छे से करो, इतना फोकसली करो, उसमें सारी एनर्जी ऐसे कर लो कि अपन हम्म, को देखे ही नहीं सर्कल ऑफ कंसर्न को। हम्म, उसमें अपना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस इतना बड़ा हो जाएगा कि सर्कल ऑफ कंसर्न अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर आ जाएगा। हम्म, तो जो चीज अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के पहले बाहर थी ना, वो अपने हम्म, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर आ जाएंगी। हम्म, सो अभी आपके हाथ में जो कंट्रोल में है, हम्म, उसमें आप एक्चुअली चेंज ला सकते हो। हम्म, सिर्फ उस पे एनर्जी, टाइम, मनी, सब कुछ फोकस करना, दैट्स इट। ओके। वो कर लिया ना तो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा। बढ़ अभी जाएगा। क्या करवा रहे हैं अपन को, ऑटो पायलट करवा रहे हैं, क्यों? अपना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है उससे। हम्म, अपन ऑपरेशंस को ऑटोमेट कर देंगे तो अपनी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। कैपेसिटी बढ़ गई तो सारी जो चीजें हैं वो सर्कल ऑफ कंसर्न अपने अंदर आ जाएगा, हम्म, क्योंकि अपना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा। यस। बस यही बात है। आपको और कोई एरिया है जिस पे काम करना है? हाँ, सो राइट नाउ सो मैंने दो ही एरिया लिखा, लाइक आई टोल्ड यू अबाउट माय वाइफ, हाँ। देन आई साइड पुटिंग वर्क ऑन ऑटो पायलट। सो हम्म। दैट इज माय सर्कल ऑफ कंसर्न। अब उसका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस विल बी गिविंग मोर टाइम to put systems in place. This is in my control. I can do it. Uh, एनी अदर एरिया? uh, गरिमा, गरिमा, यू देयर? Yes, yes, I'm here. I need you to write circle of concern and circle of influence on 2 pages in your notebook, Okay. and choose an area which is of your concern and you feel यार यहाँ पे मुझे helplessness feel होती है, अच्छा. और उसमें आप लिखो what is in your control। जो कंट्रोल में वो आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में आएगा, और जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं वो सर्कल ऑफ कंसर्न में लिखो। Okay. Circle of concern and circle of control. इन्फ्लुएंस, Influence. इन्फ्लुएंस। Okay. जो सर्कल ठीक ऑफ है. इन्फ्लुएंस होता है वो आपके कंट्रोल में होता है, ठीक है. और जो आपका कंसर्न होता है वो आपके इन्फ्लुएंस से बाहर भी हो सकता है। जैसे इफ आई एम कंसर्न जीडीपी इंडिया की बढ़ नहीं रही, वो मेरा सर्कल ऑफ कंसर्न है, पर उसमें मैं इन्फ्लुएंस तो कुछ कर ही नहीं सकती ना। ठीक है. मेरे Got हाथ it. में है कि मैं अपना बिजनेस ग्रो कर सकती, तो आई विल कंट्रीब्यूट टू द जीडीपी ऑफ इंडिया। ठीक है. तो वी हैव टू बाइफरकेट आवर मेंटल थिंग्स इनटू टू, सो दैट वी आर वेरी वेरी फोकस्ड कि मेरे हाथ में क्या है। तो अपन क्या है, बहुत बार क्या है, दिमाग से इधर उधर भटक जाते हैं सर्कल ऑफ कंसर्न में। ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये वो ये वो ये वो। तो उससे क्या होता है, अपनी एनर्जी डिसपिएट हो जाती है, फैल जाती है चीजों में। तो ये एक्सरसाइज से अपन को पता चल जाएगा कि यार ये चीज मेरे कंट्रोल में है। तो अपन सारी टाइम और एनर्जी अपने जो चीजें कंट्रोल में उसमें लगा देंगे, अपन इधर उधर मेंटली भटकेंगे ही नहीं। ठीक है. Got it. तो आप ये मुझे लिखकर अभी बताओ कि व्हाट इज इन योर सर्कल ऑफ कंसर्न एंड व्हाट इज इन योर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। चूज एरिया ऑफ योर लाइफ विच यू वांट टू वर्क ऑन। Okay. नोटबुक में आप लिख रहे हो? हाँ, लिख रही हूँ मैं बस. I'm just starting. ठीक है, जब तक मैं कुछ पढ़ रही हूँ। The one way to determine which circle our concern is in is to distinguish between the haves and the bees. The circle of concern is filled with the haves. I will be happy when I have a house paid off. If only I had a boss who wasn't such a dictator. If only I had a more patient husband. If I had more obedient kids. If I had my degree. If I could just have more time to myself. ये सारे कहाँ पर हैं? Circle of concern. The circle of influence is filled with the bees. I can be more patient. I can be more wise. I can be more loving. It's a character focus. Anytime we think the problem is out there, that thought is a problem.
We empower what's out there to control us. The change paradigm is outside in. What's out there has to change before we can change. The proactive approach is to change from the inside out, to be different. And by being different, to effect position change in what's out there. I can be more resourceful. I can be more diligent. I can be more creative. I can be more cooperative. But those things were in our circle of concern. As long as we focused our efforts on those things, we accomplished nothing except to increase our own feelings of inadequacy and helplessness and to reinforce our son's dependence. It was only when we went to work in our circle of influence, when we focused on our own paradigms, that we begin to create a positive energy that changed ourselves and eventually influenced our son as well. By working on ourselves instead of worrying about the conditions, we were able to influence the conditions. Because of position, wealth, role, or relationships, there are circumstances in which a person's circle of influence is larger than his circle of concern. This situation reflects a self-inflicted emotional myopia, another reactive, selfish lifestyle focused on circle of concern. Though they may have to prioritize the use of their influence, proactive people have a circle of concern that is at least as big as their circle of influence, accepting the responsibility to use their influence effectively. Direct, indirect, or no control. The problems we face fall in one of the three areas: direct control, problems involving our own behavior; indirect control, problems involving other people's behavior; or no control, problems we cannot do anything about, such as past or situational realities. The proactive approach puts the first step in the solution of all three kinds of problem within our present circle of influence. Direct control problems are solved by working on our habits. They are obviously within our circle of influence. These are called private victories of habit 1, 2, and 3. Indirect problems are solved by changing our methods of influence. That are the public victories, habit number 4, 5, 6 that we learn. How liberating it is to accept the idea that I can learn new methods of human influence instead of constantly trying to use old, ineffective methods to shape up someone else. No control problems involve taking responsibility to change the line on the bottom of your face, to smile, to genuinely and peacefully accept these problems and learn to live with them, even though we don't like them. In this way, we do not empower those problems to control us. Lord, give me courage to change the things which can and ought to be changed, the serenity to accept the things which cannot be changed, and the wisdom to know the difference. Changing our habits, changing our methods of influence, and changing the way we see our no control problems are all within our circle of influence. Expanding the circle of influence. It is inspiring to realize that in choosing our response to circumstance, we powerfully affect our circumstance. When we change one part of the chemical formula, we change the nature of result. I worked with one organization for several years that was headed by a very dynamic person. He could read trends. He was creative, talented, capable, and brilliant. Everyone knew it. But he had very dictatorial style of management. He tended to treat people like gophers, as if they didn't have any judgment. His manner of speaking to those who worked in organization was, "Go for this, go for that, now do this, now do that. I will make the decisions." The net effect was that he alienated most of the entire executive team surrounding him. They would gather in the corridors and complain to each other about him. Their discussion was all about very sophisticated, very articulated, as they were trying to help the situation. "You can't imagine what's happened this time," someone would say. "The other day he went into my department. I had everything all laid out, but he came in and gave totally different signals."
But so everybody was in the company was complaining about the boss. He's only 59. Do you think he will survive for more 6 years? I do not know. He's the kind of person they probably won't retire anyway. But one of the executives was proactive. He was driven by values, not feelings. He took the initiative, he anticipated, he empathized, and he read the situation. He was not blind to president's weakness, but instead of criticizing them, he would compensate for them. Where the president was weak in his style, he did try to buffer his own people and make such weakness irrelevant. And he did work with president's strengths, his vision, talent, and creativity. This man focused on his circle of influence. He was treated like a gopher also, but he would do more than what was expected. He anticipated the president's need. उसने खुद की बॉस की नीड को समझने की कोशिश की. He read with empathy with the president's underlying concern. उसने अपनी बॉस के कंसर्न को समझने की कोशिश की. So when he presented information, he also gave his analysis and his recommendation based on that analysis. As I sat one day with the president in the advisory capacity, he said, Stephen, I just can't believe what this man has done. He's not only given me information I requested, but he's provided additional information that's exactly what we needed. He even gave me his analysis in terms of deepest concern and a list of recommendations. The recommendations are consistent with the analysis, and the analysis is consistent with the data. He is remarkable. What a relief not to have to worry about this part of the business. In the next meeting, it was go for this, go for that to all executive but one. To this man, it was what is your opinion? His circle of influence had grown. So ये समझ में आ रहा है, इसमें एक बॉस और एक एम्प्लॉय है. सारे एम्प्लॉयज उस बॉस की बुराई करते हैं, पर पूरे सारे एम्प्लॉयज में से एक एम्प्लॉय था जिसने समझने की कोशिश की कि बॉस की नीड क्या है. उसका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस क्या था? अरे बॉस को कुछ समझ में नहीं आता होगा, बॉस को ये चाहिए. तो उसने सोचा, उसने एक्स्ट्रा मेहनत की, उसने अपनी तरफ से रिकमेंडेशन और एनालिसिस दिया, और ये बॉस सबको बताता था ये करो वो करो, बट इस लड़के को वो बोलता था व्हाट इज योर ओपिनियन. क्यों? उस लड़के ने, जो एम्प्लॉय था, उसने अपना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस इंक्रीज किया. उसने अपने दिमाग में बॉस को ब्लेम नहीं किया कि बॉस ऐसा है वैसा है, सब लोग बुराई कर ही रहे थे ना, पर उसने देखा मैं क्या कर सकता हूँ, वेर आई कैन बी रिस्पॉन्सिबल, वेर आई कैन क्रिएट समथिंग इन दिस एरिया, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग. क्या रे, तो सभी बोलते बॉस खराब है तो बॉस खराब ही होगा ना, एक मैं अकेला थोड़ी हूँ बोलने को. So Basically change the perception. he chose not to blame. Okay. He chose he will not blame the situation or the person. He chose proactivity. He chose where I can be responsible, where I can take a stand and create something new, where I can create something in that area. He didn't try to change the boss. He didn't try to change the behavior, the attitude of the boss. He changed himself. He changed his own approach. This caused quite a stir in the organization. The reactive minds in the execution corridors began shooting their vindictive ammunition at this proactive man. It's the nature of a reactive people to absolve themselves of responsibility. अंडरस्टैंड, जो रिएक्टिव पीपल होते हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एब्जॉल्व कर लेते हैं. एब्जॉल्व का मतलब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को गिव इन कर देते हैं. आप जब किसी को ब्लेम करोगे, जब आप विक्टिम बन जाओगे, तो आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते ना सिचुएशन में. रिस्पॉन्सिबल तो सामने वाला बंदा है, क्योंकि उसके कारण सब कुछ गलत हो रहा है. मैं क्या करूं? It's so much safer to say I'm not responsible. If I say I am responsible, I might have to say I am irresponsible. It would be very hard for me to say that I have the power to choose my response, that the response I have chosen has resulted in my involvement in a negative, collusive environment, especially if there are years I had absolved myself of responsibility for results in the name of someone else's weaknesses. So these executives focused on finding more information, more ammunition, more evidence as to why they weren't responsible. But this man was proactive towards them too. Little by little, his circle of influence towards them grew also. It continued to expand to the extent that eventually no one made any significant moves in the organization without that man's involvement and approval, including the president.
But the president did not feel threatened because this man's strength complemented his strength and compensated for his weakness. So he had the strength of two people, a complementary team. This man's success was not dependent on his circumstances. Many others were in the same situation. It was his chosen response to the circumstances, his focus of circle of influence that made the difference. There are some people who interpret proactive to mean pushy, aggressive, insensitive, but that isn't the case at all. Proactive people aren't pushy. They are smart, they are value driven, they read the reality, and they know what's needed. Look at Gandhi. While his accusers were in the legislative chambers criticizing him because he wouldn't join the circle of concern of rhetoric condemning the British Empire for the subjection of Indian people, Gandhi was out in the rice paddies, quietly, slowly, imperceptibly expanding his circle of influence with the field laborers. बहुत प्यारा एग्जाम्पल है. गांधी जी, उनका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस छोटा था, बहुत छोटा था. उनका कंसर्न क्या था? इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए. बहुत बड़ा कंसर्न था, राइट? सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जब उन्होंने शुरू किया था कुछ भी नहीं था, बट उनको पता था उनका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस छोटा है, तो उनने अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में जान लगा दी उसको इंक्रीज करने के लिए. Initially, when I got married, I had very small circle of influence. My husband also didn't listen to me. Nobody listened to me. I was very small. सबसे छोटी बहू थी, घर में कुछ कहने के लिए नहीं, बाहर कुछ कहने के लिए, पति भी नहीं सुनता, फाइनेंशियली भी कुछ नहीं. So I just knew that the only thing I have control over is establishing myself, becoming financially independent and working on faith and patience. मैंने faith and patience को आज इतना बड़ा बना लिया. Everybody takes opinion of me. They want to know what I think. My husband wants to know. He takes my opinion. So मेरा circle of influence बढ़ गया. और circle of influence सिर्फ business में नहीं बढ़ा, personal life decisions में भी बढ़ गया. पर मैंने सिर्फ उस पे काम किया. I didn't work on कि घर का situation कैसा है, घर की finances कैसे हैं, घर का way of being कैसा है, घर कैसे चलता है. ब्लेम करने के लिए, क्रिटिसाइज करने के लिए लंबी लिस्ट है, पर मैं उस पर फोकस करूंगी तो बिजनेस नहीं कर पाती. आई यू अंडरस्टैंडिंग? सो एट द मोमेंट आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बहुत छोटा हो सकता है, but that's the only thing you have in control and you have to focus your energy only in that. तो आप बाइफरकेट करो सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को, और सारी एनर्जी, टाइम, एनर्जी, अटेंशन सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में लगा दो. A groundswell of support, of trust, of confidence followed him through the countryside. Though he held no office or political position, through compassion, courage, fasting, and moral persuasion, he eventually brought England to his knees, breaking political domination of 300 million people with the power of greatly expanded circle of influence. गांधी जी की बात कर रहे हैं यहाँ पर. The haves and the bees. The proactive approach is to change from the inside out, to be different by being different, to effect positive change in what's out there. I can be more resourceful, I can be more diligent, I can be more creative, I can be more cooperative. One of my favorite stories in the one of the Old Testament part of fundamental fabric of the Judeo-Christian tradition is the story of Joseph, who was sold into slavery in Egypt by his brothers at the age of 17. Could you imagine how easy it would have been for him to languish in self-pity as a servant of Potiphar, to focus on the weakness of his brothers and his captors and all he didn't have? But Joseph was proactive. He worked on B. And within a short period of time, he was running Potiphar's household. उस servant Potiphar का मुखिया बन गया. He was in charge of the Potiphar's head because of the trust was so high. अच्छा, गंगूबाई देखिए, गंगूबाई काटीवाला. She was sold into slavery, right? Her life was messed up. But she took, उसका circle of influence क्या था? कि वो कोठे पे बैठ के कोठे वालों की लाइफ सुधार सकती है. सिर्फ उसने उस पे काम किया. रोने के लिए उसके पास हजारों रीजंस थे, गंगूबाई के पास.
कि मेरा घर छूट गया, मैं सुंदर थी, मैं ये हो गया, उसके साथ क्या नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ गंगूबाई के साथ। उसने बोले लाइफ मिल गई ना। मेरे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में क्या है, ये कोठा। जिंदगी भर अब कोठा तो नहीं छोड़ सकती मैं। उसने अपने कोठे को अपनी लाइफ बना ली। She focused on what she can change, where she is, and how she can do it. Beautiful movie. Circle of concern and circle of influence. Concern तो उसका बहुत सारा था कि कोठा में बेचनी नहीं चाहिए, लड़कियों को बेचना नहीं चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसे कैसे हो गया, मुझे कोई कैसे बेच सकता है, मेरी मम्मी ऐसे क्यों बात करी, मेरे पापा ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, मेरी इज्जत क्यों नहीं है, मैं तो इतने बड़े घर से आई हूँ, मैं तो इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मैं कोठे में कैसे बिक गई। राइट, शी फॉरगेट अबाउट हर। उसने कंसर्न, सर्कल ऑफ कंसर्न में सोचा ही नहीं। अगर सर्कल ऑफ कंसर्न में सोचती तो वो तबाह होके मर जाती, सुसाइड कर लेती। उसने सिर्फ सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे फोकस किया कि मैं अब कोठे वाली हूँ, मेरी ये रियलिटी है, आई विल एक्सेप्ट इट, आई विल स्माइल। शी स्माइल्ड, शी बिकेम द बेस्ट प्रोस्टिट्यूट, एंड देन शी बिकेम टू इन्फ्लुएंस। उसके हाथ में जो था, शुरू में छोटा छोटा यूज किया कि हमें तो छुट्टी चाहिए भाई, कोठा वाली है तो क्या हुआ, काम कर रही हम। डू यू रिमेम्बर द डायलॉग फ्रॉम द फिल्म गरिमा? आपने देखी मूवी? हाँ, देखी हूँ, but I don't remember. वो बोलती है ना I कि mean, हमें तो एक छुट्टी चाहिए। उसका इतना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ गया था, उसने बोला तो मैं तो छुट्टी लूंगी, हम सब कोठे वाली है ना मूवी देखने जाएंगे आज। वो मूवी got it. देखने हाँ. जाती है, वहां पे कोई से छेड़ता है, बोलता है हाउ डेयर यू, हमारी भी छुट्टी है, हमें भी हक बनता है छुट्टी मनाने का। शी स्टूड अप। Yeah. दैट वाज हर फर्स्ट सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, that was in her control. First, she chose to become the best prostitute. That was her circle of influence. नर्क में थी यार, नर्क में थी, नर्क में उसने खुद का सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस चूज किया। उसने एक्सेप्ट कर ली अपनी रियलिटी, और उस रियलिटी में जो उसके हाथ में था उसने बेस्ट किया। फिर What a बंदी perfect example of circle of influence and concern. एक्स्ट्रॉर्डनरी मूवी। Yeah. ये समझ लिया ना तो जिंदगी आप कहीं नहीं अटकोगे, कहीं नहीं अटकोगे। इतनी ब्यूटीफुल बुक है ये हैबिट नंबर 1 है कि आप कितनी गंदी सिचुएशन में, उसमें आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है और सर्कल ऑफ कंसर्न क्या है। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे अपनी था जमा लो, सर्कल ऑफ कंसर्न में मत जाना, फंस जाओगे। जो हाथ में कंट्रोल में है ना, उसको नेक्स्ट लेवल कर दो कि कोई क्वेश्चन ही नहीं कर सके। Then the day came when Joseph was caught in the difficult situation and refused to compromise his integrity. As a result, he was unjustly imprisoned for 13 years. But again, he was proactive. He worked on the inner circle of being instead of having. Soon he was running the prison and eventually entire nation of Egypt. Second only in Paroa, वो जेल में रह के इजिप्ट का लीडर बन गया था। जितने भी लीडर्स हुए वो जेल जाकर निकल कर आके नेशन के लीडर्स बने, इंक्लूडिंग महात्मा गांधी एंड अफ्रीका का जो भी वो है। बिकॉज वो जेल जाने के बाद भी दे वर नॉट फोकसिंग ऑन कि ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ऐसा वैसा ऐसा वैसा। वो देख रहे थे जेल में मैं क्या कर सकता हूँ। उन्हें जेलर्स की इन लाइफ इंप्रूव करनी शुरू कर दी, अपने आसपास लोगों की लाइफ इंप्रूव करनी शुरू कर दी। गौरव जी, मजा आ रहा है? करंट है बुक में? Yes, Richa, but now my meeting is just about to start, so ओके, I think I'll परफेक्ट। I'll leave परफेक्ट। and I'll join tomorrow again. मैंने इस बुक का जो क्रक्स है ना वो समझा दिया आपको। Yes, 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 प्रोएक्टिव का कंसर्न पूरा मैंने क्रक्स yes, समझा दिया। yes. अब इसमें है कि आप इसमें मैं छोटा सा बता रही हूँ, एक मेकिंग एंड कीपिंग कमिटमेंट्स। छोटे छोटे Hmm. कमिटमेंट शुरू करो अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में। Okay. छोटा कमिटमेंट करो कि मेरे जैसे मेरे हाथ में है कि मैं जिम जा सकता हूँ रोज हेल्थ में, Hmm. तो नो Hmm. मैटर व्हाट गो टू जिम। Hmm. अपनी इंटेग्रिटी रखकर अपना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाओ, जिसमें आप कुछ कर Hmm. सकते हो उसको पूरा करो। Hmm. मेक स्मॉल कमिटमेंट्स एंड इंक्रीज योर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। खुद से प्रॉमिस करो और खुद को पूरा करो। By Hmm. making and keeping promises to ourselves and others, little by little, our honor becomes greater than our moods. Feelings और मूड से मत लीड करो, अपने promises को ऑनर करना शुरू कर दो।
The power to make and keep commitments to ourselves is the essence of developing the basic habits of effectiveness. Knowledge, skill, and desire all are within our control. We can work on any one to improve the balance of the three. As the area of intersection becomes larger, we more deeply internalized the principles upon which the habits are based and create the strengths of character to move us in the balanced way towards increasing effectiveness in our lives. ये बोल रहा है जेल जाने की जरूरत नहीं है इफेक्टिवनेस और प्रोएक्टिविटी का टेस्ट करने के लिए. If it's how we view our problems and where we focus our energies. One It's second, like जैसे like how you said, like gym जाने के लिए, like take a promise every day to keep up the circle of influence. Start with the circle of influence. जैसे ऐसे और क्या क्या चीज है? Give me like 4-5 examples. Like आप अपना सर्कल ऑफ कंसर्न ढूंढो पहले. अच्छा, like you asked me to write it down. मैंने तो कुछ नहीं लिखा because मुझे उस टाइम कुछ समझ नहीं आ रहा था. Now I can write it down after the class. Like हाँ. what's my circle of अब influence? आपको समझ में आएगा ना, हेल्थ है, रिलेशनशिप है, फाइनेंसेस है, सोशल हो गया, कोई सोशल रिलेशनशिप हो गई, इंटीमेट रिलेशनशिप हो गई, बच्चों के साथ हो गया, बिजनेस हो गया, स्पिरिचुअलिटी हो गई, हेल्थ हो गई, मेडिटेशन हो गया. Hmm. So I would Got it. challenge you to test the principle of proactivity for 30 days. Simply try it and see what happens. For 30 days, work only in your circle of influence. Okay. मुझे पतला होना है, यू कांट क्रिब अबाउट मैं मोटी हूँ, क्यों मुझे टाइम नहीं मिलता, क्यों मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे सोते नहीं है, ये नहीं करते, वो नहीं करते, मैं कैसे जगूं, मैं कैसे 4 बजे उठूं, मैं कैसे ये करूं, मैं कैसे वो करूं, मेरे तो कोई साथ ही नहीं देता, मेरी फैमिली अलाइनमेंट नहीं है, मेरा पति अलाइनमेंट नहीं है, वो रात को 2 बजे आता है. आई यूज्ड टू क्रिब, राइट. आज भी मैं 9:30 बजे सो रही हूँ, मैं 4 बजे उठ रही हूँ, मेरा पति शायद 11 बजे आए, 2 बजे आए, कुछ भी आए, मेरे कंट्रोल में मैं हूँ. बट मैं सर्कल ऑफ कंसर्न से निकलूंगी तो मैं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में घुस पाऊंगी. Very true. सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को सर्कल ऑफ कंसर्न को छोड़ना पड़ेगा. बी अ मॉडल, नॉट अ क्रिटिक. बी अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन, नॉट अ पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम. Try it in your marriage, in your family, in your job. Don't argue for other people's weaknesses. Don't argue for your own. When you make a mistake, admit it, correct it, and learn from it immediately. Don't get into blaming, accusing mode. Work on things you have control over. Work on you, on be. Being पे काम करो. Having and doing पे नहीं. Look at the weakness of others with compassion, not accusation. It's not what they are not doing or should be doing that's the issue. The issue is your own chosen response to the situation and what you should be doing. If you start to think the problem is out there, stop yourself. That thought is the problem. People who exercise their embryonic freedom day by day will, little by little, expand the freedom. People do not will find that it will wither until they literally being lived. They are acting out the scripts written by parents, associates, and society. We are responsible for our own effectiveness, for our own happiness, and ultimately, I would say, for most of our circumstances. The fountain of content must spring up in the mind, and he who had so little knowledge of human nature as to seek happiness by changing anything but his own disposition will waste his life in fruitless efforts and multiply the grief he proposes to remove. Knowing that we are responsible is the fundamental to effectiveness, to every other habit of effectiveness we will discuss. Okay. ये एप्लीकेशन सजेशन ही मैंने पढ़ी थी, आपने आप देख लो. फॉर फुल डे लिसन टू योर लैंग्वेज एंड टू द लैंग्वेज ऑफ द other people around you. How often do you use or hear the reactive phrases such as if only, I can't, or I have to? ये reactive language है. Identify an experience you might encounter. How could you respond proactively? Take several movements and create the experience vividly in your mind, picturing yourself responding in a proactive manner. In the near future, where based on the past experience you would probably behave reactively. जैसे अगर मेरी कोई सिचुएशन है जहाँ पर मुझे लगता है कि मेरी मदर मुझसे ढंग से बात नहीं करती, वो मुझे डांटेगी, चीखेगी मुझ पे ना, आई विल बी लाइक, हाउ डेयर यू शाउट ऑन मी, दिस इज नॉट द वे यू ट्रीट मी, राइट? Remind yourself of the gap between stimulus and response. There is a
gap between stimulus and response. Make a commitment to yourself to exercise your freedom to choose. Select a problem from your work or personal life that is frustrating to you. Determine whether it is direct, indirect, or no control problem. Identify the first step you can take in your circle of influence to solve it, and then take the step. Try the first 30-day test of proactivity. Be aware of the change in your circle of influence. Okay. ये एप्लीकेशन पार्ट है. Got it? Yes. Beautiful था. Very बस nice. ठीक है, खत्म हो गया चैप्टर आज का. Great. So आप चूज करो where you want to work. It's a very 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 powerful exercise. गरिमा लाइफ चेंजिंग है, लाइफ चेंजिंग. एक बार इम्प्लाई कर दिया और अपनी हैबिट में डाल दिया ना कि मुझे तो काम ही सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे करना, सर्कल ऑफ कंसर्न में नहीं. प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, देखो चूज ठीक है. करना पड़ेगा. अगर नहीं करोगे Okay. तो क्या ज्ञान बन के रह जाएगा. Mm-hmm. तो चूज ठीक है. कर लो कि यार इस पे काम करना ही करना है. Okay. So today is like circle of influence and circle of concern. That's the हाँ, chapter, right? proactive, being proactive, choosing to Bring work in circle of influence and not in circle of uh, concern. concern. Okay. और ये मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गया अपन को आज. Ekdam. Like with the Gangubai example, it is clear गंगूबाई thoroughly, was and clear. हाँ, yeah, बहुत with strong Gandhi ji example. also, it was like very much clear. हाँ, पर गंगूबाई का मिलके तो क्या है, बहुत ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि वो तो अपन कनेक्ट कर पाते हैं उनसे. तो कि अपन ने तो Correct. देखा भाई कितनी गंदी पोजीशन में गई, पूरी ऑटोबायोग्राफी अच्छे से देखी है, और कितने उसने मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के, गिवन शी वाज हाईली एजुकेटेड, हाईली ब्यूटीफुल, उसने सेलेक्ट किया कि कोठा में रह के वो मिसाल बन गई यार. शी Hmm. the most difficult part anybody can choose, and she was not ashamed. She didn't Very judge true. herself.